Students, this is Farman Ali. So in this video I will discuss about the poetic devices. It means devices means something which is used to make something correct or we can do anything in a proper manner. तो कोई भी चीज़ को अगर हमें proper manner से करना है और we have to do it efficiently, so we need some kind of tools or the devices by which we can bring excellence in any work. तो किसी भी काम में हमें एक्सीलेंस अगर शो करना है आपका और वी हैव टू जस्ट शो दैट इट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू, सो दैट इज़ द डिवाइस और द टूल्स विच वी नीड so that we can make anything very beautiful. So similarly that for poetry also we have to use some kind of tools. So these are the literary tools, है ना. तो ये जो आपके tools हैं आपका, so these are not like machines और समथिंग लाइक हैमर. तो कोई हथौड़ा या कोई रेंच इस तरह की चीज़ें नहीं है आपका. सो दीज आर द राइटिंग्स और द वर्ड्स और द फ्रेजेस और द राइमिंग विच वी यूज़ टू मेक समथिंग very interesting also or to make some kind of changes to express our ideas. तो अगर हमें अपने ideas को express करना है या अपने views को express करना है आपका, so we can make it very interesting also so that people will like it also. तो लोग उसको पसंद करें आपका, so we have to just do some kind of addition or we have to just do some kind of rhyming so people like our writings also or the ideas also. So this is the thing which we have to discuss in this. So there are so many poetic devices which we have to study. तो बहुत सारे आपके poetic devices हैं आपका जो हमें देखने हैं. So you can come to this now. So what are the poetic devices? So you can just look in this. So these are some of the devices or the tools which we use for the poems. तो अगर हमें पोइट्री या कोई पोएम को लिखना होता है आपका, सो वी हैव टू यूज़ दीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. इनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं आपका, बिकॉज द स्पीच व्हाट इज स्पीच. सो स्पीच इज़ द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इमेजेस. तो अगर हम किसी भी स्पीच को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं आपका, सो इट हैज़ मैनी फॉर्म्स ऑल्सो. तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं आपका. So you can see in this that personification, consonance, metaphor, assonance, hyperbola, simile, alliteration, rhyme. So these are the different devices which are used in the poetry. तो poetry के अंदर ये different different devices हैं आपका which we have to use or the poet uses. तो we have to just learn about them one by one. So we will come to the first, that is alliteration. So just look in this that what is happening in this, that if the sounds of the consonant we all know means except 5 letters, if all the letters are coming, so these are the consonant है. We all know that there are 21 consonants. So 21 consonants में आपका it can be any consonant if that consonant is repeated at the beginning of the words or within the words. If it is repeating means वो बार बार आपका new word में means if it is a sentence, so in sentences if there are 5 words or there can be a repetition of that consonant but that consonant will be same. जो consonant होगा आपका that will be same and it mostly comes in the beginning. तो starting में आपके word के वो आप देख सकते हैं इसमें that W is the consonant which is coming in many words. So that she was wide-eyed and wondering while she waited for Walter to waken. So it is the sound of W which is coming again and again means repeatedly, so that it is giving a different rhyme or different, ठीक है, मीन्स ब्यूटिफिकेशन. तो ये चीज़ हम करते हैं आपका. तो इफ़ यू सी सच थिंग, सो व्हाट इट मीन्स दैट वी हैव यूज्ड एलिट्रेशन इन दिस. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is assonance. So assonance means that if the sounds of a vowel, so vowel we all know that a, e, I, o, u. if you get sound of vowel means a, e, I, u की sound अगर आपको बार बार repeatedly आ रही है आपका words के अंदर आपका, so it means that we have used that device and that device name is assonance. तो उस डिवाइस को हम कहते हैं आपका assonance. You can look in this, clap your hands and stamp your feet. So you can look in this that A which is in the red
color, जो A आपका red color में आपका, so it is the vowel which is coming, so the sound of A is coming means in most of the words. So you can see in this also that it beats as it sweeps, as it cleans. So the sound of E is coming in this, and this is the vowel sound. So this is the thing which we have to see in the assonance. Now come to the next, that is consonants. So consonants means consonant है ना. तो if you see the repetition of the consonant sounds, it can be inside, ठीक है, it can be end of the line. तो हो सकता है कि it can be at the end of the line means अगर वो आपके word के last में आपका आ रहा है, आपका वो consonant की sound आपकी repeated हो रही है आपका, या फिर it can be possible also that it is coming inside of the word, वर्ड के अंदर भी वो साउंड आपकी आ सकती है, बट दैट साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट. Is it clear now? You can see in this that Noam the worm took the garden by storm this morn. So you can look in this that RM, so Rom. So this is the sound which is coming, and this is the consonant sound. So we can see that RM. So both are consonant, and it is coming in the end. So it is coming at the end. तो end में आपका ये चीज़ आ रही है आपका. So it is showing that this is the case of consonants. Clear? Now you can come to the metaphor. So metaphor means that if we compare two things, but these two things are not same, but we are giving a sense that it is that something which is looking like the ठीक है, तो कहीं ना कहीं similarity, it is like a simile. So means both things are not common, but the sense which we are using, जो meaning actual, so that is common. But metaphor if we use, so that there are some of the helping verbs which come in that. So that is are, was, were. You can look in this, my life is a movie. So that life is not a movie. So you can see okay, that in movie also you can see there are so many changes, you know, which we see in the movie also. Sometimes it becomes very dramatic also, they can be comedy also, they can be a sad moments also, happy moments also. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं मूवी में. Likewise that we also see such kind of things in our life also. Our life is not consonant, ठीक है, इट चेंजेस, है ना, एवरी मोमेंट. तो कहीं ना कहीं सारे जो लाइफ के आपके टाइम है आपका, सो इट विल नॉट रिमेन सेम. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवी, दैट्स वाई दे आर जस्ट गिविंग अ कंपेरिजन. इफ़ वी से दैट लाइफ इज़ अ रेस, so means life is a race means that as we see that there is a too much competition, हाँ बहुत सारा competition है आज के वक्त में आपका, but है ना. सो रेस मीन्स दैट यू आर जस्ट रनिंग विद अदर पार्टिसिपेंट्स, है ना, एंड यू हैव टू जस्ट win that race. तो in life also that if you will not struggle, if you will not work hard, so it will create problem for yourself. तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मेटाफोर में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं आपका, बट दोज आर नॉट सेम, बट द मीनिंग इज सेम. इज इट क्लियर नाउ? Now come to the next thing, that is imagery. So imagery means that there are some words which we use, many words which we use in the sentences. By means creating an image of these words, we get some idea of those things, है ना. तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्ड्स में देखें दैट द लाइन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, सो दैट दिस इज द सेंटेंस ओनली, है ना, सेंटेंस है आपका, बट दैट रोरिंग एंड द लाइन, सो वी आर क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द लाइन एंड द रोरिंग द साउंड विच लाइन इज क्रिएटिंग. तो ये दोनों चीज़ें आपका आ रही हैं, एंड फॉरेस्ट इमेज ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑल्सो कमिंग. सो दीज आर नॉट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, वो सारी चीज़ें मेरे सामने नहीं है आपका, but by using these words that I am making images of those things, like that it is a kind of reality which is happening in front of me. तो कहीं ना कहीं वो reality मेरे सामने हो रही है आपका. So means that it gives a sense. ठीक है, sense can be, if I say that chow or any fast food I eat, that is very spicy and crispy. So when you get such words spicy, crispy, so that your tongue will have water. तो कहीं ना कहीं आपकी टंग जो वाटरी हो जाएगी, मीन्स दैट दीज आर द वर्ड्स ओनली,
बट इट इज़ गिविंग अ फीलिंग, है ना. सो वो फीलिंग टेस्ट की हो सकती है, इट कैन बी ऑफ हियरिंग ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ लुकिंग एनीथिंग ऑल्सो. So there are different sense which we can get by only by the words only. Now come to the next, that is repetition. So repetition means we it is already telling, repetition means if something repeats. So if you see that if some words are repeated, okay, in any poem or in any kind of stanza, so it gives a idea or the feeling of a poet. So that reader is reading that, so that he feels good also when he reads. तो वो जब वो उसको पढ़ेगा आपका, so something will be very interesting. ठीक है. So now look in this, that yeah, you got that something, I think you will understand when I feel that something. So you can look in this, that something is coming to time. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. So this is a kind of rhyming which is happening in this. Okay. So this is the repetition device or the figure of speech. Now you can come to the mood. So that what moods, so they are the different moods which we have, है ना. Sometimes you see that आप WhatsApp को use करते हैं. So sometimes you show your anger, sometimes you show your sadness, sometimes you show that you are very happy also, sometimes you show that that you do not want to talk to anybody. So these are the different moods, and what it creates, so they create a atmosphere. तो कहीं ना कहीं एक एक है ना, चीज़ों को क्या करना है आपका, मूड को क्रिएट करना आपका. सो मीन्स दैट we can enjoy that part also. So sometimes that writers or the poet create such thing, so we can imagine such kind of things, that what is about to happen in the story. तो स्टोरी में आपका क्या होने वाला है आपका, so we can look that thing also. Now come to the hyperbole. So hyperbole means that a figure of speech in which exaggeration is used for emphasis or effect. Means extreme exaggeration means वी से एनीथिंग बियॉन्ड द लेवल. आप कभी आप देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आप कहते हैं, मीन्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई एम जस्ट यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, सो पीपल विल थिंक अबाउट के यस दैट वॉट आर वर्ड्स दैट ही इज़ यूजिंग. सो दीज आर द नाइस वेज दैट ही इज़ यूजिंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन या राइटिंग. जैसे आप देखें, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन दैट पर्सन कैन स्लीप कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर. ऐसा पॉसिबल तो नहीं है आपका कि इंसान 1 साल तक आपका सो सके आपका. सो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सजरेशन. अगर किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा अपने बढ़ा चढ़ा के आप कह रहे हैं, सो इफ़ यू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स वॉट इट टेल्स, सो मीन्स द डिवाइस इज दैट इज़ हाइपर बोले. सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. नेक्स्ट come to the onomatopoeia. So onomatopoeia means that if you get the sounds of anything, आप देखें that if you get the sound of water, air, so that how the sound comes of anything, है ना. It can be of animals also, it can be of object also, है ना. तो कुछ भी चीज़ हो सकती है आपका वो. like if somebody is talking, if they are talking very slowly, so that is the whispering, है ना. like if you just join your hand and just you put them together by force, है ना, by force, so it is a kind of clap. So you will get the sound of the clap because of the collision, means if something which is striking. तो अगर कुछ चीज़ टकराती है आपका, so this is the sound of clap. इस तरीके से आप वाटर देखें, that when you just drop any mug of water in the bucket, so splash sound will come also. So if you get any sound, so it describes that thing. Next you can see that personification. Okay, so personification means that person. So we use so many kind of words which show that something which is non-living but we give a life to it, means that we show that is living. तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को अगर आप लिविंग समझ के आप उस चीज़ को कह रहे हैं आपका, इफ आई से दैट हेयर वॉल्स ऑल्सो लिसन, सो वॉल्स इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, है ना. वॉल्स जो है वो आपके क्या है, नॉन लिविंग थिंग आपका. मीन समटाइम्स ना दीवारों के भी कान होते हैं आपका. सो इट डज नॉट मीन दैट वॉल कैन हियर, बट वॉट आई एम डूइंग, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ personification, means that it is living thing, है ना. जैसे वॉल एक लिविंग थिंग है आपका, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू कैन लुक इन दिस ऑल्सो.
leaves dancing across the lawn, so that leaves does not dance, है ना, that it is not, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो जो डांस कर सके आपका, बट वी आर यूजिंग सच वर्ड सो दैट इट लुक्स गुड ऑल्सो, एंड इट शोज दैट हाउ इमेजिनेटिव द पोएट और द राइटर इज। तो कितना इमेजिनेटिव आपका राइटर है आपका, सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। यू कैन सी ऑल्सो दैट द एंगर ऑफ अ पर्सन ईट्स हिम, है ना, तो एंगर जो गुस्सा है आपका, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो एंगर कैन नॉट ईट एनी बडी, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग विच कैन ईट समथिंग, बट what we are just giving a living characteristics, कहीं ना कहीं हम उसको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं आपका, सो मीन्स दैट इट ईट्स, है ना, माइंड ऑल्सो, इट ईट्स पीपल ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है आपका कि एंगर खाता है कोई चीज़ आपका, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दीज आर सम ऑफ द devices which we use in the poem or the poetry, so we can make them very interesting also. So it is a kind of expression or the way which we use to express our facts or the ideas to bring some kind of effect in the words or the sentences. So I hope that you have understood. So if you have liked it, so please subscribe my channel, and thank you so much, and you can comment also.